Hello everyone, welcome back to your own channel Chemistry Simplified by Pooja ma'am. We are back with another chemistry topic, that is latent heat for class 9 students. Okay, in this video we'll be understanding what is latent heat of fusion, what is latent heat of vaporization. So before we begin, first of all, we know that matter can be classified into three states, that is solid, liquid and gas. And we can easily convert a solid to liquid and liquid to gas. How? By changing the temperature and by changing the pressure. So for this topic, in this video, we will be understanding how the temperature changes can help in bringing about this interconversion. Okay. So first of all, what do we understand by melting point? What is melting point? So the temperature at which the solid changes into liquid at its atmospheric pressure is known as the melting point of that particular substance, right? And every different substance has its own melting point. Like for example, ice starts melting. Ice melts at 0 degrees Celsius. And likewise, water boils at 100 degrees Celsius. Every other substance, the melting point of iron is very, very high. The melting point of any other element is different. So it varies from element to element, okay? Now in this, as you can see a diagram in front of you, that's with the help of this diagram we'll be understanding what is latent heat of fusion. So let's begin. In order to understand what is latent heat of fusion, what we will do, we have taken a beaker filled with ice. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक beaker लेंगे, उसमें बहुत सारा ice fill कर देंगे. Okay, we have put some ice into the beaker and उसके साथ एक thermometer लगाया है such that the tip of the thermometer touches the ice. Okay, now what will happen? Initially when you supply heat to the system, what we will see is that the temperature and the thermometer starts to increase initially. But as the temperature reaches to 0 degrees Celsius, we will see that even though the melting of ice is taking place, the temperature in the thermometer remains constant. Now the question that is coming to your mind might be why? Why the temperature remains constant? Okay, now होता क्या है, सबसे पहले ये हम समझते हैं that जब हम इस सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, हमें पता है सॉलिड क्या है, एक आइस क्या है, एक सॉलिड पार्टिकल, और सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो जैसे हम इस सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सिस्टम की इंक्रीज होती है. जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी भी इंक्रीज होती है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इंक्रीज होता है. एंड व्हेन इनिशियली धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे these molecular vibration starts to increase, which helps them to break free the force of attraction, and thus when it is able to break free the force of attraction, the ice changes to liquid. ठीक है, but इस सिस्टम में हम क्या देख रहे हैं, though the process remains continuous, we will observe that the temperature remains constant at 0 degrees Celsius. Now why it remains constant? Because whatever heat you are supplying to the system, जो भी heat हम इस system को supply कर रहे हैं, वो सारा heat जो है वो कौन ले रहा है, इस system के अंदर absorb एक hidden energy है, that is taking it to interconvert the solid into liquid, and that hidden heat is known as latent heat. Okay, that hidden heat which is using the energy supplied to the system to convert the solid into liquid, and that is known as latent heat of fusion. We use it for the fusion of ice. So if we want to define what is latent heat of fusion, we can say that the amount of heat energy required to convert 1 kg of ice into liquid at its constant temperature atmospheric pressure is known as latent heat of fusion. अब जब सारा आइस, ये जो सारा आइस है वो जब मेल्ट हो जाए, मान लीजिए ये आपका सारा आइस जैसे जैसे मेल्ट हो गया, now it is water. Again what will happen? Same process. जब तक आप इस सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे, इनिशियली आप ये टेम्परेचर तो धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि ये वाटर है, वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड टिल इट रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस. जैसे ही थर्मोमीटर पे आप 100 डिग्री सेल्सियस देखोगे, आप देखोगे अब
even though the process is continuous, you will see the temperature becomes constant at 100 degrees Celsius. Why? Again the reason is same. जो भी हीट एनर्जी आप सिस्टम को दे रहे हैं वो कौन ले रहा है? सिस्टम एक्वायर कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है to interconvert the liquid into gas state. So what that hidden heat which is converting the liquid into gas state or steam, that is known as latent heat of vaporization. So if you want to define it, we can define it that amount of heat required to convert 1 kg of water or liquid to steam at a constant temperature and atmospheric pressure is known as latent heat of vaporization. We can also understand with the help of a graph. Water क्या ice freezes और the melting point of ice is 0 degree Celsius. ठीक है, तो जब तक यहाँ पे 0 degree Celsius पे है टेम्परेचर, आप देख सकते हो the graph remains constant from A to B until it all the ice has melted. जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं होती ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. जैसे ही सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, अगेन विद द टाइम द टेम्परेचर विल इंक्रीज. ठीक है, एंड जैसे ही आप 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस अगेन यू विल सी द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट टिल होल ऑफ द वाटर इज बॉयल. और पॉइंट डी पे जब तक ये सारा पानी वेपराइज नहीं हो जाता तब तक ये टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा. तो जब at 0 degree Celsius, that heat which is converting the solid ice into liquid, that hidden heat is known as latent heat of fusion, and the amount of heat which is required to convert the liquid 1 kg of liquid to steam, that is known as the latent heat of vaporization. You might have seen many examples. जब आप अपने हाथ पे आइस रखते हो तो आपको क्या ठंडा महसूस होती है? क्यों होती है? क्योंकि जो आइस होता है वो सारी हीट जो है आपके हाथ से एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है, आपने देखा है कभी कभी स्टीम से गलती से आप अगर गरम गरम पूरी पे हाथ अगर आपका लग जाता है तो यू फील दैट बर्न, राइट? सो द स्टीम बर्न इज वेरी वेरी सिवियर. Okay, so what is the reason? These are all applications of latent heat, the hidden heat which is hidden inside the system. Okay, and because of that only you can feel all these changes that are taking place, right? And so what we understand is when you increase the temperature, हम दो तरीके से कर सकते हैं. जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉलिड लिक्विड में बदलता है, फर्दर अगर बढ़ाओगे तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, एंड सेम वे अगर हम मान लो आपने वाटर बॉईल किया है, बॉईल करने के बाद उसे लिड से कवर कर दिया. आप लिड से कवर करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा? टेम्परेचर लोअर डाउन होगा. जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे आएगा, पानी स्टीम क्या है? इट विल गेट कन्वर्टेड टू वाटर, एंड फर्दर इफ यू फ्रीज दैट वाटर इट विल कन्वर्ट बैक टू सॉलिड आइस. सो व्हेन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर व्हाट विल हैपन? द interconversion of solid will take place to liquid and liquid to gas. So I hope this concerned topic is clear to you. If you have any doubts, do comment on the comment section, and I hope this video was useful for you. If you like my video, kindly subscribe, like and share. Thank you so much for watching. See you in the next video.